Hello everyone and very good evening. I hope you all are good. So today in the class we are going to end electrostatics and that's a relief actually. है ना? So many things we studied in electrostatics. Today in the class we will be doing questions. First I will be taking you through whatever we have studied so far. So let's start. Technically we started with Coulomb's law, है ना? And Coulomb's law talked about what? Uh, Force between 2 point charges. So if there are 2 point charges, Q1 and Q2, then what? Then for and separation between them is R. Then force acting was given as K Q1 Q2 by R ka square. K is what? K is 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R. What is this epsilon? Epsilon is your permittivity. Okay. In vacuum it is written as epsilon naught, and epsilon and epsilon naught are related as epsilon naught into epsilon R. So epsilon R is basically relative permittivity, which is written as epsilon by epsilon naught. ठीक है. So if media is something other than vacuum, then epsilon will be as epsilon, which is equal to epsilon naught into epsilon r. If media is vacuum, this epsilon will become epsilon naught, because for vacuum epsilon r is 1. ठीक है. So this thing we studied. After that, if charges are of opposite nature, force will be attractive. If charges are of same nature, force will be repulsive. ठीक है. उसके बाद we have drawn or we have learned how to find the electric field because of point charge. So if there is a point charge q and at any distance r you want to calculate electric field, then electric field value is kq by r square. Now there are ways we draw electric field lines. Electric field lines हम कैसे draw करते हैं? If there is a positive charge, then from positive charge electric field lines comes out like this, and these lines are continuous ending at infinity. If we draw the field lines from independently for negative charge, field lines will enter on negative charge, है ना? Like this. If two charge things are in the same surrounding, then accordingly we will draw field lines. ठीक है? Field lines का characteristic क्या क्या था? Field lines cannot be circular. First thing. Second thing, direction of electric field at any point is tangential to the field point. जैसे अगर आप प्लस क्यू और प्लस क्यू के लिए फील्ड लाइंस बनाओ, देन दिस फील्ड लाइंस विल लुक लाइक दिस. ठीक है. सॉरी, ठीक से ड्रॉ करती हूँ, रुक जाओ. सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है. And if you have to draw direction of electric field at any point, let's say at this point, so at this point you will draw tangent. Done it? And another thing, electric field lines cannot cross each other, because if they are crossing, then it means at a certain point electric field is having two directions, which is not possible, right? So these were the things. After that, what else we studied? I mean, after that we calculated electric field because of continuous charge distribution. तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, यहाँ पे मैंने सारी चीजों को एक जगह किया है. सो फॉर्मूला फॉर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर. ठीक है. सो कंडक्टिंग तुम्हारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा. एंड दैट ऑल्सो बी सेम विथ नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर. सो इन तीनों का फॉर्मूला सेम आने वाला. जैसे नॉन कंडक्टिंग के लिए मैंने बताया था, एट एन आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर. ऑन द सर्फेस इट इज के क्यू बाई आर, एंड एट आउटसाइड, सॉरी दिस वाज एट इनसाइड पॉइंट. ठीक है, एक सेकेंड. फॉर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है? 0. जैसे देखो ये सारे तीनों के लिए सेम क्यों होगा? इफ यू टॉक अबाउट नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अंदर कोई चार्ज नहीं है इसलिए सारे चार्जेस सरफेस पे है, बिकॉज दिस इज हॉलो स्फीयर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाज 0. ठीक है. कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की अगर बात करो तो अगेन हॉलो है, ऑल चार्जेस आर ऑन सरफेस, and that is why electric field inside is 0. Now if you talk about conducting solid sphere, so this is a conductor. Charge we can keep in the volume, but since this is a conductor, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कंडक्टर अपने अंदर चार्ज नहीं रखता,
है ना, we have studied. So even if this is a conducting solid sphere, charge will lie on the surface itself. So यहाँ इस केस में भी चार्ज क्या है, सरफेस पे है, इसलिए इन तीनों का ही फॉर्मूला सेम दिखेगा, ठीक है, बी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, बिकॉज इन ऑल थ्री केसेस जो तुम्हारा चार्ज है वो कहाँ लाई कर रहा है, सरफेस पे, and hence formula is same. So for inside point electric field is 0, on the surface it is kq by r, and for any outside point this is kq by r square. ठीक है. Now if you talk about non-conducting solid sphere, then for non-conducting solid sphere at an inside point electric field मैंने निकाला था, आप सबने निकाला है, rho r by 3 epsilon naught. On the surface it is same as before, kq by r, and for outside point kq by r square. These are the formulas we studied. ठीक है. उसके बाद हमने रिंग के लिए पढ़ा था, what will be the value of electric field because of ring at any points on its axis. So let's say we are calculating electric field at point P, which is at a distance x from the center. Then electric field formula is this. And for an arc subtending an angle theta over here, electric field was what, 2k lambda by r sine theta by 2. And here electric field was directed in this direction for positive charge, and for negative charge it will be towards the center. Here also electric field was directed in this. Okay, so we have already done these calculations, and for this if you calculate, electric field value was sigma by 2 epsilon naught 1 minus x by root under x square plus r square at any point P which is at a distance x from the center. Sigma is charge density, so this is basically charge per unit area. So this will be here q by pi r square, where r is the radius of the disk. Now we studied electric field because of seat. If you have a seat which is containing charge, that seat can be conducting, non-conducting. If the seat is conducting, electric field will be sigma by epsilon naught in the outward direction. Why? Because charge is positive. And if it is non-conducting, electric field will be sigma by 2 epsilon naught. Okay? After that, we studied electric field because of infinitely long wire at a distance r. Its value was lambda by 2 pi epsilon naught r. Remember, this is not for finite length of wire. This is for infinite length of wire. If there is finite length of wire, you need to do integration and then calculate. ठीक है. उसके बाद हमने गॉस लॉ पढ़ा था, which talked about the flux. So electric flux का formula क्या है? Electric flux formula is E dot A. This is the flux का formula. So this is dot product of electric field vector and area vector. Area vector हम किधर लेते हैं? This is outward normal to the surface. This is outward normal to the surface. ठीक है. And Gauss law talked about flux through closed surface. That is, flux through closed surface का कहने का मतलब क्या होता है? 3D surface. ठीक है. So if there is a 3D surface and there is charge Q1, Q2 inside, then flux through it can be clearly written as E dot ds through the closed surface is equal to Q enclosed by epsilon naught. So here charge will be Q1 plus Q2 by epsilon naught. Even if there are outside charges present like this, these outside charges won't contribute in flux through the closed surface. Though electric field at any inside point of the closed surface will be because of both inside and outside point, but flux will be purely because of what? Flux will be purely because of inside charge. Okay? Everyone clear? Chalo. Now let's talk about potential. So we discussed potential. This is work done per unit charge. How much externally we are doing work per unit charge in bringing a charge from infinity to certain point around the established charge system. So let's say this is the established charge system and we want to bring the point charge Q at this point. Then how much work we need to do per unit charge, that will be termed as potential at this point, and which was equal to KQ by R. Potential is a scalar quantity. Okay? Its SI unit is volt. This thing we studied, right? So this was this. Now, if we talk about the potential due to continuous charge distribution, so we are almost limited to learning potential because of conducting solid sphere, hollow sphere, non-conducting hollow sphere. But again, if you are getting any other formula, I mean any other continuous body, किसी और के लिए अगर पूछ लिया, then you can calculate.
one important formula that will help you in calculating that thing is dv equal to minus e dot dr. This is the formula we studied, right? And ये पढ़ा था हमने, इसी की हेल्प से हमने पोटेंशियल निकाला था बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन सॉलिड स्फीयर एंड ऑल, है ना? इस चीज को अगर आप देखोगे, आई मीन लेट्स से इफ ई एंड डी आर इन द सेम डायरेक्शन, then dv can be written as minus e dr. And if you look at here, electric field is shown as, sorry, electric field का value is shown as minus dv by dr. So this is also called potential gradient. dv by dr को there I forgot to tell you, but today I will make it clear. So this is called potential gradient. ठीक है? Gradient कहने का मतलब क्या हुआ? dv is potential, dr is displacement. So how much potential is dropping for certain displacement? So this is potential gradient. Done it? अब देखो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, लेट्स से इट इज E1 in the x I cap direction and this is E2 in the j cap direction and it is E3 in k cap direction, then और लेट्स से नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाओ एक सेकेंड, let's go with that particular thing which is more helpful. So let's say potential दिया हुआ है तुम्हें 3x square y plus y cube x z plus z x y. ठीक है, this is the potential. ठीक है, so when we will calculate, if in the question it is given that potential is this in terms of x y z, ठीक है, and you are asked what will be the electric field, then we can take the help of potential gradient. How we can solve it? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी d by, अब देखो यहाँ पे dr मैंने लिया, r was variable, here r is I mean here x है, y है, z है, सब है. So r vector here can be written as x I cap plus y j cap plus z k cap, है ना? डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस. सो ऐसे केसेस में इफ एक्स वाई जेड थिंग्स आर गिवन, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू तुम रखना, फर्स्ट यू डिफरेंशिएट द होल थिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन यू विल बी राइटिंग हियर आई कैप का डायरेक्शन. व्हाई आई कैप? बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग द होल पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. then you will be writing here d by dy, or now again you will differentiate potential now with respect to y, and here you will write j cap plus again d by dz, and again potential you will be keeping, and here you will give the direction k cap because you are differentiating with respect to z. ठीक है, क्योंकि x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज i cap, y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज j cap, z के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज k cap. सो दिस वे वी कैन राइट. अब देखो डिफरेंशिएट तुम कैसे करोगे? इफ यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस थिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, देन यू हैव टू टेक y एंड z एज ए कांस्टेंट. ठीक है, सो अगर मैं एक तुम्हें डिफरेंशिएट करके दिखाऊं तो d 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब x z plus zxy. If you are differentiating it with respect to x, then consider y as a constant, z as a constant, y as a constant. अगर आप ऐसा करते हो तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y is constant, that will come out. 3 is a constant, बाहर ले आओ. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x. So this became 2x. Now what will be the value here? Y cube is a constant, z is a constant, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx by dx 1. So this became 1. And here zy is constant, dx by dx 1. So this will be the first term. This I cap लिखोगे. Similarly, you will solve. So whenever you are given potential like this, x और y के टर्म में दिया है, z और x के टर्म में दिया है, and you are asked electric field, so you have to use the potential gradient. ठीक है, चलो. Now there is potential because of continuous charge distribution. So conducting solid sphere, conducting hollow sphere, same as electric field. नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इन तीनों के लिए फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है, सो एट इनसाइड पॉइंट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस. ठीक है, पोटेंशियल एट द सरफेस इज के क्यू बाय आर एंड पोटेंशियल एट एन आउटसाइड पॉइंट इज के क्यू बाय स्मॉल आर. ठीक है,
अब यहाँ से आप आ जाओ एट इनसाइड पॉइंट फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉरी ये वाला फॉर्मूला विल बी फॉर इनसाइड पॉइंट, ठीक है, इट इज फॉर दिस. So for inside point, in terms of charge, if you have to write kq by 2r cube 3r square minus r square, हमने फॉर्मूला सिग्मा के टर्म में निकाला था. You can remember it in terms of q. kq by 2r cube 3r square minus r square. This is for the inside point. On the surface again same as before, kq by r. Outside point के लिए again same kq by small r. ठीक है. So these are the formulas we studied. उसके बाद हमने potential energy पढ़ा. If we have charge system, two charge system, if there is, so if there is two charge system like this, q1 and q2 separated by distance r, potential energy of the system is k q1 q2 by r. ठीक है. If both charges are of same nature, potential energy will be positive. If both charges are oppositely of opposite nature, potential energy will be negative. ठीक है. Now, even if there are more than two charges, we can calculate potential energy of the system. जैसे 3 charge के लिए, 4 charge के लिए, 8 charges के लिए. We simply need to do the pairing. और मैंने बताया था pairing को अगर तुम मिस कर जाओ तो उससे बेहतर है you should understand how many number of pairs are going to exist. So that will be equal to NC2. N is the number of charges present in the system. 2, just because we are taking pair of charges. Okay, so we have already done this, we don't need to go into that. And then there was a formula: if there is electric field and then there is a charge system, let's say two charge system I am taking, then potential energy of this system will be potential energy of q1 charge, potential energy because of this q1 charge placed in the electric field will be q1 VA. Let's say this point is A, so its potential is VA, and this point is B. Then q2 ka potential energy because of electric field present will be this, and because of two charges close to each other, potential energy will be this. So total this one. ठीक है. We have already learned this thing. ठीक है. उसके बाद we studied dipole. Dipole क्या था तुम्हारा? Dipole is basically two charges equal and opposite directed. Two charges equal and opposite separated by very small separation. There is center of dipole. Let's say this distance is 2a. Dipole is a vector quantity. Its direction is from negative to positive charge. So in this direction, dipole value is written as 2q into, q into 2a. यानी कि q into separation between them. And direction is how much? It is, it is directed in which sense? From negative to positive. It's clear, right? Now for the dipole, we calculated electric field on the axis and on the equatorial point. So on the axis, it is equal to Kp, 2 Kp by R cube. If R is far, far greater than A, this was A, right? And at an equatorial point, electric field is oppositely directed to that of dipole and value is Kp by R cube. Okay? With negative. And then we calculated potential because of dipole also. So if there is a dipole and potential we can calculate at any angle theta, potential value is equal to K P dot R by R cube. So this is equal to Kp cos theta by R square. You can see clearly here electric field is inversely proportional to R cube, but potential is inversely proportional to R square. Okay? So these were the important things. Dipole in external electric field we studied. If we are keeping dipole in external electric field, then what can happen? Force can apply, torque can apply, system will have potential energy. Force value will be 0 if electric field is uniform, and force will be this force. Okay. Okay. So, and this force will be not 0. Just give me 1 second. एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड. ओके, क्या होगा बताओ? व्हेन फोर्स इज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देन फोर्स विल बी नॉट 0 if electric field is what? Non uniform.
Torque का value is written as how much? It is written as P cross E. This is your torque. What is the potential energy? Minus P dot E. We defined a stable and unstable equilibrium of dipole. So at an angle theta equal to 0 degree, dipole is stable. That is when dipole is directed in the direction of electric field, it is stable. When it is directed opposite to the direction of electric field, it is unstable. है ना? We also studied one more formula, that is what? That is your dipole, when dipole will perform HHM because of a small displacement from the stable position. So in that case, what was the time period formula? 2 pi root under I by TE. ठीक है? So these are the formulas we studied. कल के क्लास में मैंने electrostatics of conductor बताया था. So I told you, if you are giving, I mean, if you are dropping conductor in the electric field, that electric field won't stay inside the conductor for long. That will stay only for some fraction of second, and after that, electric field inside the conductor will be zero. So we know inside conductor there cannot be electric field, and since there cannot be electric field, if you see here, dv equal to क्या होता है? Minus E dot dl. So just now you have seen E is equal to 0 inside conductor, dv is 0. That is inside conductor at each point, potential is what? Potential is constant. है ना? And since potential is constant throughout, electric field has to be perpendicular to the surface. Done? Because if it is not parallel, then there will be need of work to be done in displacing charge from one point on the surface to another. But if it is equipotential, work done should be zero. And that is why electric field is what? Perpendicular, like this. Okay. So this is your dv equal to 0. What else was there? Yes. Second thing I told you, if you are giving any charge to the conductor, conductor won't keep charge in its volume. It will give this charge to the surface. Why? Because if you use Gauss law now, E dot ds क्या होता है तुम्हारा? Q enclosed by epsilon naught. We already know electric field inside conductor is zero. So if E is zero, flux is zero. And if flux is zero, that implies Q enclosed will be zero. So conductor के अंदर कोई charge होगा नहीं. It means if you are giving it charge, that charge is not staying in the volume. It will go on the surface. तो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे. चलो कोई ये बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है अभी तक कहीं भी? तो लेट मी नो. डन है? Let me know if you have any doubt. Anyone, कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ हो, you can let me know. No doubt, ठीक है. Okay, किरण. Others? किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम एक काम करेंगे. वी विल डू क्वेश्चंस. ठीक है? तो सबसे पहले ना मैं तुम लोगों को एक रैंडम क्वेश्चन दे रही हूँ, which is a very common question actually, I'd say. So let's say there is a conducting hollow sphere. So this is what? This is conducting hollow sphere. And let's say its radius is r1 and it has charge q naught on its surface. कितना charge है इसके surface पे? Q naught charge है. Now what I'm telling you is there is another identical conducting hollow, not identical, let's say its radius is r2, but this is also conducting hollow sphere. And what we're doing, we are connecting this sphere to this sphere. ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है, what will be the final amount of charge that will be on R1 first sphere and on second sphere? Initially, first पे Q naught charge. It was not connected to second. Now what we are doing, we are connecting it. So after connection, charge कैसे vary करेगा? क्या होगा? You think around it and let me know. चलो, अब हमें सोचने का समय है हमारे पास. So we will do question. तुम लोग घर पे तो करते नहीं हो. Let's do it here now. ठीक है? Everyone, any, everyone excited for this thing? या कोई बोर हो गया अचानक से? बताओ. देखो तब से मैं बोले जा रही थी, सब बड़े खुश थे. चलो मैम बोल रही है, हम सुनते हैं, मजा आ रहा है. अब क्या होगा? अब हम दोनों चुप रहेंगे और तुम क्वेश्चन से बात करोगे.
एंड आई विल सिंपली वेट फॉर योर आंसर्स, ठीक है? तो तुम लोग आंसर करके मुझे बताओ। चलो टेक। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डायरेक्टली गेट इट, थिंक अराउंड दिस क्वेश्चन, ठीक है? रैंडमली कुछ भी सोचो, जो दिमाग में आ रहा है वो अप्लाई करो, बट डू समथिंग। इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़े, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, यूज करो, ठीक है? दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स। किरण, यस। क्वेश्चन मैंने ये बोला कि वी आर हैविंग कंडक्टिंग hollow sphere A, let's say this is A and its radius is R1, it has charge Q naught, ठीक है? Now what we are doing, we have another hollow sphere also conducting, which is B, and this conducting sphere is initially neutral. This is what? This is initially neutral. Now what we are doing, we are connecting sphere 1 with sphere 2. That is, we are connecting A with B. After connection is established, what will be the charge distribution on A and B? So you have to tell me what is charge on A finally and what is charge on B finally. Finally, you have to talk about this. Initially, you know, Q A पे charge Q naught है, B पे 0 है. But that is before the connection is made. After the connection is made, what will happen? This is the question. Okay, somebody here. किरण कैसे? वर्मा, तुमने क्या देखा? पहले स्फीयर पे चार्ज क्यू नॉट था ए पर, ठीक है? कनेक्शन मेड करने के बाद क्या होगा? दोनों पे चार्ज क्यू ए, तो मैं पूछ रही हूँ ए पे चार्ज क्या है वो बताओ, क्यू बी मीन्स बी पे चार्ज क्या है वो बताओ। फाइनली मेरा क्वेश्चन ये है। देखो तुम लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करा है, दिख रहा है अभी। क्योंकि अगर तुम लोगों ने कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए का बुक खोला होगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिस इज सो मच देयर। तुम लोगों ने नहीं किया, प्यार से इग्नोर किया है ना? बहुत अच्छा। और फिजिक्स उधर अकड़ के बैठा है, वो बोल रहा है तुम क्या मुझे इग्नोर करोगे? मैं तुम्हें वाइडली इग्नोर करूंगा। फिजिक्स को तुमने 1% इग्नोर किया, ये तुम्हें 10% इग्नोर करेगा, बता रही हूँ। डोंट डू दिस। चलो साथ में करते हैं, समझते हैं। बट आई होप यू पीपल विल हेल्प मी थ्रू आउट बाई सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो सभी लोग ध्यान से सुनो और अच्छे से सुनो। देखो हमारे पास चार्ज स्फीयर ए था, ए पे कितना चार्ज है? क्यू नॉट। ए पे कितना चार्ज है? क्यू नॉट। नाउ देर इज अनदर स्फीयर दिस, इस पे कितना चार्ज है? कुछ नहीं, बट बोथ आर कंडक्टिंग, राइट? इट्स रेडियस इज R1, इट्स रेडियस इज R2। अब मुझे ये बताओ, पहले स्फीयर का पोटेंशियल कितना है, अभी कितना है बिफोर द कनेक्शन? सो पोटेंशियल ऑन ऑफ सरफेस ए इज हाउ मच? के क्यू नॉट बाई R2। कब? लेट्स से दिस वाज R1, दिस वाज R2, सो ये R1 है। इनिशियली क्या पोटेंशियल है इसका? ये पोटेंशियल है, राइट? के क्यू नॉट बाई R1। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस थिंग? जीरो। इनिशियली जीरो, क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, पोटेंशियल क्या होना है इसका? जीरो। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कनेक्टिंग दीज टू विथ अ वायर। क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा ना? चार्ज क्यों फ्लो होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा दो चीज के बीच में, इफ टू थिंग्स आर कनेक्टेड एंड देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, देन चार्ज विल फ्लो। तो यहाँ पे ए से चार्ज बी की तरफ फ्लो करेगा इधर। क्यों? क्योंकि ए का पोटेंशियल वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इनिशियली, सो चार्ज विल फ्लो।
एंड चार्ज कब तक फ्लो करेगा? until the time potential of both the sphere will become same. So let's say finally charge on this is Q1 and charge on this is Q2. So if final charge on this is Q1, final charge on this is Q2, it implies that potential of both the sphere is now same, and that is why no more charge is flowing. So you will say finally KQ1 by R1, that is potential of 1, KQ2 by R2, that is potential of 2 will be equal. Because चार्ज स्टेबलाइज हो गया, ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा, नेट चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मतलब है दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया. सो दिस इज दिस. अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2. सो देखो Q1/Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. जिसका रेडियस ज्यादा होगा उस पर ज्यादा चार्ज बचेगा, जिसका कम होगा उस पर कम जाएगा. इट इज लाइक दिस. लेकिन हमें तो नेट वैल्यू निकालना है ना. नेट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सो फाइनली चार्ज कितना है? Q1 एंड Q2. अब देखो तुम एक काम करो, इन दोनों स्फीयर को एक सिस्टम मान लो. ये दोनों स्फीयर को क्या मान लो? एक सिस्टम. तो ये एक स्फीयर ए था, इस पे चार्ज था Q0. ये स्फीयर बी था, इस पे चार्ज इनिशियली क्या था? 0. सो इनिशियली सिस्टम पे कितना चार्ज है? Q0. टोटल चार्ज क्या है? Q0. Finally, after the connection is made, what is happening? After connection made, final charge क्या दिख रहा है? यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है. ठीक है. सो टोटल चार्ज फाइनली क्या है तुम्हारा? Q1 प्लस Q2. डन है. सो चार्ज कहीं बाहर तो नहीं जा रहा ना, चार्ज ए से बी की तरफ जा रहा है. डन. तो अगर इनिशियली ए और बी का चार्ज Q0 था, फाइनली ए और बी का चार्ज Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q0. ठीक है. एंड वी ऑलरेडी नो Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2. दो इक्वेशन हमें मिल गया. नाउ विद द हेल्प ऑफ टू इक्वेशंस यू विल बी एबल टू कैलकुलेट Q1 और Q2. सपोज हमें Q1 निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 को हम क्या लिख सकते हैं? Q1 R2/R1 is equal to Q0. सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी डील विथ सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. अगर यहाँ पे तुमसे पूछता कि फाइनल चार्ज डेंसिटी दोनों पे क्या होगा, तो फर्स्ट पे चार्ज डेंसिटी क्या लिखोगे? Q1/4πR1 का स्क्वायर. सेकंड पे चार्ज डेंसिटी क्या है? Q2/4πR2 का स्क्वायर. चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज इज ऑन एरिया, राइट? सो चार्ज डेंसिटी इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब आप इन दोनों का रेशियो ले लो. लेट्स से दिस इज σ1 एंड लेट्स से दिस इज σ2. तो σ1/σ2 को आप क्या लिखोगे? यू विल राइट इट लाइक Q1/4πR1 का स्क्वायर इंटू Q2 इंटू 4πR2 का स्क्वायर. 4π कैंसिल होगा. what you will be getting R2 square by R1 square into Q1/Q2, and Q1/Q2 can be written as R1/R2. So R1/R2. Finally, you will be getting R2/R1. ठीक है. So Q1/Q2 is R1/R2, but σ1/σ2 is R2/R1. These are the two important relations. ठीक है. So finally charge distribution will look like what? If there is charge here initially Q0, it was neutral, or let's say initially it has charge, whatever value of the charge is initially. Finally charge ratio on both will be directly proportional to their radius, and finally surface charge density ratio will be inversely proportional to the radius. ठीक है. So this is the thing you have to remember. Done? चलो. Everyone clear with this? Everyone clear so far? किसी को डाउट है तो बताओ. नो. चलो ठीक है. So do this question now. Take your time, do it. I will be launching the poll. सारे लोग क्वेश्चन पढ़ो, टाइम लो और क्वेश्चन को करो. देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही उससे रिलेटेड है.
एंड दिस इज PYQ ऑफ JEE मेंस एंड नीट। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर सबको पता होगा, अभी अभी हमने किया है इसको। ओके, टू करेक्ट आंसर, वन रॉन्ग। व्हाट अबाउट अदर पीपल? ओनली फोर आंसर सो फार। ओके, फाइव। चलो, I'm ending the poll because you don't need to even solve it. Just now we have done it. There are two conducting spheres of radius A and radius B. They are connected by conducting wire. The ratio of charges of two spheres respectively is, if they are connected by conducting wire, ratio of charges on one on two will be directly proportional to their radius A by B. So correct answer is C, right? Now do this. थोड़ा सोचो और करके बताओ। चलो, let me launch the poll now so that you can answer. It's there, ठीक है? Okay, very good. One correct answer. One more answer, but that is wrong. You need to recheck. Two correct answers. Very good. Three correct. सभी लोग ट्राई करो। Okay. Okay, let me end the poll here. Let me explain this to you. What is the question given? Question ये कह रहा है, sigma is the uniform surface charge density of a thin spherical cell of radius r. ठीक है? So there is a surface charge density here, sigma. The electric field at any point on the surface of a spherical cell is how much? ठीक है? So just see here, there is a surface charge density sigma, done it, and the electric field, you know that because of hollow sphere, electric field lines looks like this. ठीक है? अब देखो, डायरेक्टली तुम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे? फ्रॉम वॉट एवर फॉर्मूला यू हैव लर्न सो फार, उससे भी कर सकते थे। ये कैसा दिख रहा है? तुमने सीट के लिए पढ़ा ना? मैंने तुम लोगों को दो एग्जाम्पल बताए थे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है? कंडक्टिंग के लिए फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग का मतलब क्या था? कंडक्टिंग का मतलब था सीट के दोनों तरफ चार्ज है ना? एंड नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या था? सीट के सिर्फ एक साइड पे चार्ज है। एंड नॉन कंडक्टिंग के केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज फॉर प्लेन सीट ऑफ चार्ज। एंड अगर तुम इस स्फीयर की बात करो और एक छोटा सा सेक्शन इसका लो, एक छोटा सा सेक्शन तुम इमेजिन करो बॉल को। ठीक है? फुटबॉल ले लो, बहुत बड़ा सा फुटबॉल है, और उसके एक छोटे से पोर्शन को अगर आप इमेजिन करो, ऊपर सरफेस के छोटे से पोर्शन को, सो दैट विल लुक लाइक कि वो एक प्लेनर सीट का छोटा सा पार्ट है। इस प्लेनर सीट का छोटा सा पार्ट और इस स्फीयर का छोटा सा पार्ट ऑलमोस्ट सेम डायमेंशन का दिखेगा। ठीक है? सो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑन द अपर सरफेस, राइट?
वी ऑलरेडी हैव सीन द डिस्ट्रीब्यूशन. इनर सरफेस पे चार्ज नहीं है, अपर सरफेस पे है. तो चार्ज डेंसिटी इज ओनली ऑन द सिंगल साइड ऑफ द सरफेस, and that is why electric field at any outside point just above it will be equal to sigma by epsilon. अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना है देन यू कैन यूज गॉस लॉ. ठीक है, वो क्या कहता है तुम्हारा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन. तो कोई भी एक सीट, कोई भी सरफेस के एक छोटे से पॉइंट से पास करता हुआ आप क्या बना लो, सिलेंडर. लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है. सो देयर वोंट बी फ्लक्स दिस साइड, है ना, क्योंकि उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसलिए मैंने बोला इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं. आउटसाइड से फ्लक्स ऐसे जा रहा है एंड फ्लक्स वैल्यू इससे फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा. तुम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे ये मैंने सिलेंडर लिया है, ऐसा सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और कर्व सरफेस का area vector will be in this direction. So angle between area vector and electric field for curved surface is 90 degrees. So flux will be zero through the curved surface. There will be flux only through this circular portions, right? Through this there can't be flux. Flux is zero because there is no electric field. Through this flux will be E into area. Okay? And what will be Q enclosed? If this is area A, then this section is also having area A. So charge will be sigma into A by epsilon naught. So electric field कितना दिख रहा है तुम्हें, sigma by epsilon. This thing we can calculate. ठीक है, and this formula is true only for point closer to the surface. Point closer to the surface. कितने भी दूर वाले point के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे नहीं निकाल सकते. ठीक है, दूर के पॉइंट के लिए भी ऑलरेडी, ऐसे भी तुम फॉर्मूला एक पढ़े हो, अगर होलो स्फीयर है उस पे चार्ज क्यू है, तो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है, और अगर यहाँ पे के को आप ब्रेक कर लो, क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. और अगर आप ध्यान से देखो तो Q/4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा. So this is nothing but sigma by epsilon naught, same as this. Done है. But what I'm trying to tell you is कि ये जो Gaussian surface का जो तुमने यूज किया ना to calculate electric field in front of surface, this you cannot use this sort of Gaussian surface cylindrical for a far point. क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत बड़ा स्फीयर ये ऐसा बनाए, तो मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आई मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैंने एंगल 0 बोला, यहाँ 90 बोला, दैट मे डिफर. बट अगेन वैल्यू विल बी सेम फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर फार पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि हमने पढ़ा है ये हॉलो स्फीयर पे अगर तुम्हारा चार्ज क्यू है सरफेस पे, तो कोई भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर. और अभी अभी मैंने दिखाया, इसको अगर ब्रेक करोगे आप तो दैट इज सेम एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फॉर्मूला इज सेम just at this point or at any further point. Formula is sigma by epsilon naught. ठीक है, so correct answer will be what, sigma by epsilon. डन है. ठीक है, चलो. ठीक है, अभी जितना छोटे छोटे शब्दों में समझे तो बेहतर है. आई शुड नॉट हैव एक्सप्लेन मोर बिकॉज दैट माइट कंफ्यूज यू फॉर नाउ. अभी तुम लोगों को ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है. मोर क्वेश्चंस यू विल डू, मोर यू विल अंडरस्टैंड द थिंग. नाउ डू दिस क्वेश्चन. Read the question, try to understand it. Even okay, two correct answers, very good.
क्या होगा देखो, क्या बोल रहे हैं, देर इज अ चार्ज क्यूब विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब। सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द क्यूब। ऐसा क्यूब बना लो, ठीक है। और चार्ज कहाँ रखा हुआ है? एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द सरफेस। देखो, चार्ज के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से कि चार्ज यहाँ सेंटर पे, ठीक है। चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब। देन फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द सर्फेसेस क्या होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब will be q by epsilon naught, because that is the charge enclosed. लेकिन अगर तुमने सेम चार्ज को लेट से तुमने सरफेस पे रख दिया, यहाँ रखा, तो अगर तुमने क्यूब के सरफेस पे चार्ज को रखा है, तो दैट चार्ज इज नॉट completely inside, डन है। And when you are keeping things on surface of cube, then half of its portion is inside the cube and half of its portion is outside the cube. क्योंकि अगर तुमने क्यूब की सरफेस पे रखा चार्ज को, अगर तुमने एक और सेम क्यूब ऊपर से डाल दिया, सपोज कर लो इसके ऊपर तुमने ऊपर से एक और क्यूब को रख दिया, देन दिस चार्ज विल कम एट द सेंटर ऑफ टू कॉम्पोजिट क्यूब्स, ठीक है। सो फॉर दोज टू क्यूब्स दिस चार्ज विल बिकम इनसाइड चार्ज, एंड हेंस फ्लक्स विल बी through two cubes. Flux will be how much? It will be equal to q by epsilon naught. So through single cube we have to calculate. So flux through single cube, that is flux through the cube in this question, will be equal to q by 2 epsilon naught. Q2 आया, समझ में आया ना तुम्हें? क्योंकि चार्ज इज नॉट completely inside, it is at the surface. At the surface means it is only half inside. क्योंकि इसको completely सरफेस के अंदर, क्यूब के अंदर लाने के लिए, we need to keep another cube on the top. Then if we look at two composite cubes together, then this q charge is inside and those two composite cubes will become cuboid, right? So through single cube flux will be this much. इसी तरह से अगर तुम्हारा चार्ज सपोज कर लो यहाँ पे सरफेस पे ना रख के कॉर्नर पे रखा हुआ, कॉर्नर का कितना पोर्शन चार्ज अंदर कंट्रीब्यूट करता है? इफ you need to bring such more 7 identical cubes in order to cover this, ठीक है। so 8 cubes मिलकर, अगर 8 cubes साथ में आते हैं, then this charge at the corner will look like it is at the center of those 8 composite cubes. So overall मैं ये कहना चाह रही हूँ कि when you are keeping charge q at the corner, if its 1/8 portion is inside this cube, so flux will be, for this thing flux will be how much? q by 8 epsilon, ठीक है। सो कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा होगा, जैसे एनसीईआरटी मैंने बोला तुम लोगों को बनाने के लिए, बट तुम लोगों ने किया नहीं क्वेश्चन कुछ भी, आई नो दैट। सो वहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस इज रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल से परपेंडिकुलर सर्टेन ए डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यों रखा गया है। पूछ रहा है व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस थिंग। सो तुम लोग उस क्वेश्चन को जाकर करोगे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट हियर, यू विल डू इट इफ यू आर इंटरेस्टेड, है ना। मोर स्पून फीडिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, you should do it. Now do this question, breathe it, do it, let me. What two answers so far? Both are incorrect actually. You need to recheck. Recheck करो एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? There is a particle of charge minus q and mass m. So there is a charge, point charge of value minus q and mass m.
and this is going in a circle of radius r around an infinitely long line charge. So there is infinitely long line charge, and around this line, this is going in a circle of radius r. Okay. Now it has a charge density of plus lambda. The time period will be given by what? So if this is moving in a circle, time period को कैसे लिखते हैं? 2 pi r by v. One time period means it will cover 2 pi r distance. If its velocity is v, then time period is 2 pi r by v. Task is to calculate velocity. Since this is a circular motion, how circular motion happens? If there is some force which can provide centripetal force. Then, so here, this is a negative charge. Electric field is directed in this sense. And since electric field is in this direction, on negative charge, force will act in this direction. Then, so wherever the charge is, force will act towards the wire, yani ki towards the center. So here, electrostatic force will provide centripetal force. So electrostatic force का value क्या होगा? QE, and this should be equal to mv square by r. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r at a r distance. So this is equal to mv square by r. Now what is this? R will get cancelled, and v square we are getting, right? V is equal to how much? Q lambda by 2 pi m epsilon naught root under. What will be the time period? Time period is your 2 pi r into v by v. So by v करोगे तो कितना चला जाएगा ये? 2 pi m epsilon naught by q lambda. ठीक है. अगर इसको ध्यान से करो तो यहाँ पे आंसर के टर्म में दिया है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख सकते हैं. ठीक है. सो एक काम करो, 2 पाई आर, यहाँ क्या है तुम्हारा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से डिवाइड भी करना होगा. तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू हाउ मच? के. So here it is k, and this is 2 and this is q and lambda, right? So 2kq lambda, and ऊपर क्या बच जाएगा? ऊपर you will get only m. So answer will be B. ठीक है. This is the answer we are going to get. चलो अब मुझे इसका आंसर फास्ट बताओ. इसमें तो बस फॉर्मूला है. So everyone will let me know कि क्या आंसर आ रहा है. चलो, प्रीवियस केस में आई गॉट 1 करेक्ट आंसर एटलीस्ट. चलो सभी लोग आ जाओ पोल में. एवरीवन वोट हियर. यस. पोटेंशियल पूछ रहा है, सही से आंसर करो. इट इज आस्किंग पोटेंशियल, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या कर रहे हो तुम लोग? 3 आंसर्स, ओनली 1 करेक्ट. पोटेंशियल का आज भी रिवाइज करवाया यार, तुम लोग बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो सीरियसली. मोर इनकरेक्ट आंसर. क्या चल रहा है ये? पोटेंशियल बिकॉज ऑफ डाइपोल क्या था? केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर. और ये या फिर के पी डॉट आर बाई आर क्यूब. तो पोटेंशियल थोड़ी ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है. देयर इज आर टर्म हियर, यू नीड टू सॉल्व इट एंड देन सी. तो केपी कॉस थीटा बाई आर क्यूब करोगे ना, सॉल्व करोगे तो आएगा, सॉरी, आर स्क्वायर. तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. करेक्ट आंसर विल बी सी. सच में तुम लोग सरप्राइज करते हो. क्या है ये? चलो डू दिस नाउ.
Good, actually, you're trying, you're solving, it's great. चलो सही है. क्वेश्चन करो सभी लोग. सभी लोग ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइन में दिया हुआ है, ठीक है. सो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट. ठीक है, इसको एसआई यूनिट में तुम कन्वर्ट करोगे. ठीक है. सो कितना होगा बताओ. वन डाइम इज इक्वल टू क्या लिखोगे? हाउ मच न्यूटन? एनी आइडिया, एनीबडी? यस. नो नितिश नहीं. एनीवन? Kiran, that will be Lakshmi and Kiran. This will be in power 10 to the power minus 5, not plus 5. 10 to the power minus 5 न्यूटन. क्योंकि आंसर तुम्हें न्यूटन मीटर में दिया है ना, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 10 डाइन मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर कुलम. ठीक है. तो दिस इज योर 10 टू द पावर माइनस 4. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है. टॉर्क क्या होता है तुम्हारा? पी क्रॉस ई, है ना. Angle is given. If the dipole is placed in uniform electric field making an angle 30 degree, so mod of P, mod of electric field into sin 30. If you go on to solve this, P का वैल्यू क्या आएगा बताओ? P is your charge 0.01 coulomb into distance between them, that is 0.4 millimeter. So that will become 4 into 10 to the power minus 4 meter. Electric field is how much? 10 to the power minus 4. Sin 30 is how much? Half. And this is 0.01 means 10 ka power minus 2. So this is 10 ka power minus 10 into 2. So answer will be your D. ठीक है. चलो, वेरी गुड. चलो ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसके बाद वी विल लीव. Actually this question we will be more capable of doing when we will read current electricity. तो चलो अभी मैं ना इसको लीव करती हूँ. तो एक ही क्वेश्चन बचा था, and that we will do more better if we will be having idea of electricity. क्योंकि there I will teach you if difference is there, then how free charges move inside conductor. ठीक है. So after that we will be answering that question. But मेरा एक strong suggestion है to everybody, please do more number of questions. Please open PYQs. If you are a NEET student, open PYQs of NEET. If you are a JEE student, open those JEE means PYQs. Or if you don't want to go to PYQs as of now, but you should do some of PYQs, then I mean, except that, you should also be doing NCRT questions. And if you really want to practice more good number of questions, because you have to sit for JEE advanced, then you should be solving questions from HP Verma also. That's all I can say. Okay? So please keep on solving questions. In case of doubt, you can reach out to me. Chalo, thank you everyone. Thank you so much for staying with me and for solving questions. Thank you, Lakshmi. Thank you everyone. Thank you, Nitish. Thank you. Thank you. सभी लोग अच्छे